Hey dear students, how are you all? Let's start our today's topic. Today's topic is about the dissociation constant of water. आज का टॉपिक है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स अबाउट दिस टॉपिक. आज ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो सारे बच्चे अपना 100% ध्यान यहाँ पे देंगे. चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहली बात तो ये होगी, चलो सबसे पहली बात लास्ट में ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, याद है? ब्रॉन्स्टेड वाली चीज़, जहाँ पे मान लो हमने एक एसिड लिया था, एक HCl वाला, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिएक्शन हमने पानी के साथ करवाया था. ओके, यहाँ से आपको क्या मिल रहा था बच्चों? यहाँ से आपको मिल रहा था H प्लस मतलब प्रोटॉन, प्लस मिल रहा था Cl माइनस मतलब कि एनायन. ये क्या है? ये है डियर स्टूडेंट प्रोटॉन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में था, उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, इसके पास एक लोन पेयर था. ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हो ना. अब होगा क्या? ये प्रोटॉन जाएगा, ये लोन पेयर गेन करेगा एंड एक अच्छा खासा बढ़िया वाला बॉन्ड बनाता था. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बच्चों बना OH सिंगल H, उसके बाद तीसरा एक H लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, एक लोन पेयर बचा, तो यहाँ पे ये बना बच्चों H3O प्लस, जिसे हम बोलते थे हाइड्रोनियम आयन. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयन. नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली. अब होता क्या है, यहाँ पे एक Cl माइनस भी निकल रहा था. तो इस केस में हमारे पानी का जो मॉलिक्यूल है, इन गिवन केस H2O molecule is worked as in given case H2O molecule is worked as, वेरी गुड बच्चों, किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर. अब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं बेस. तो ये किसकी तरह काम कर रहा था? वो काम कर रहा था एज अ बेस. मान लो एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, स्क्रीनशॉट निकालना इसका. चलो एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे बच्चों. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, मान लो मैंने लिया एक NH3 का मॉलिक्यूल. नाउ एज यू ऑलरेडी नो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है. ओके, ये हो गया बच्चों एमोनिया. ओके, इसका रिएक्शन मैंने करवाया बच्चों किसके साथ? इसका रिएक्शन करवाया पानी के मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ. तो ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे 2 H रहेंगे, दोनों के पास एक लोन पेयर रहेगा. ये चीज़ें बहुत सिंपल है, जैसे आप सब जो जानते हो. यहाँ पे होगा क्या? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी और खींचेगा, यहाँ से एक OH, ये लोन पेयर था, एक्स्ट्रा पेयर आया, नेगेटिव चार्ज बना, मतलब यहाँ पे जनरेट हुआ हाइड्रोक्साइड एनायन, OH माइनस आयन का जनरेशन हुआ. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, प्लस क्या बना बच्चों? यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे NH4 प्लस. कैसे बना? एक H प्लस जो रिलीज हुआ, ये H प्लस गया एंड अमोनिया का लोन पेयर उठाया एंड उसने क्या बनाया? अमोनियम कैटायन बनाया. ओके, तो यहाँ पे हमारे पानी के मॉलिक्यूल ने इन गिवन केस वाटर मॉलिक्यूल donates proton, so it's worked as एसिड. वो किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? एज अ एसिड काम कर रहा है. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, जनरली वो पानी का मॉलिक्यूल एज अ एसिड एंड एज अ बेस दोनों की तरह काम कर सकता है. सो इट थिंग इज़ वेरी क्लियर. वाटर मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ can act as acid and base. So we can say that water is amphoteric
इन नेचर। पानी का नेचर कैसा होता है बच्चों? पानी का नेचर होता है एम्फोटेरिक। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने प्योर पानी, प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। उन्होंने क्या किया बच्चों? प्योर वाटर लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब प्योर वाटर लिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर पानी मतलब सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स थे, तो प्योर वाटर की कुछ कंडक्टिविटी मिली। दे फाइंड सम कंडक्टिविटी ऑफ दिस वाटर। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? मतलब उन लोगों ने क्या देखा कि प्योर वाटर लिया, कलर चेंज करेंगे तब मज़ा ज़्यादा आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे प्योर पानी भरा, ओके, सिर्फ और सिर्फ H2O। जैसे आप जानते हो बच्चों कि प्योर पानी होता है, प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट, वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आप जानते हो, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो सारे बच्चे कि प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हियर व्हाट हैपन, यहाँ पे होता क्या था कि साइंटिस्ट लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी को लिया एंड उनका कंडक्टिविटी चेक किया, तो उनको कंडक्टिविटी मिला पर बहुत लो कंडक्टिविटी मिला। उसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूव होता है कि प्योर पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है एंड वो जनरली करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, पर वो इतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जो नोटेबल अमाउंट में नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली अभी तक हम लोग क्या मानते थे? अभी तक हम लोग ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आयन दे पाए, जो चीज़ आयन्स में डिसोशिएट हो पाए, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे प्योर पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर पानी में कुछ ना कुछ आयन्स मिलते होंगे एंड इसी टॉपिक को हम बच्चों आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे बच्चों, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये चीज़ हम पढ़ने वाले बच्चों, सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो होता क्या है? मान लो मैंने पानी का 2 मॉलिक्यूल लिया, H2O प्लस H2O। अगर ये 2 मॉलिक्यूल को लेके मैंने देखा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, ये OH है, इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास OH है, इसके पास लोन पेयर होगा। अब एक मॉलिक्यूल H प्लस को डोनेट करेगा बच्चों, मतलब कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल आपको H प्लस दे रहा है, तो मान लो ये मॉलिक्यूल ने आपको यहाँ से क्या दिया, H प्लस दिया, प्लस उसने क्या रिलीज़ किया, OH माइनस रिलीज़ किया, ओके। तो ये H प्लस जाएगा, ये लोन पेयर उठाएगा, तो ये बनाएगा H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना, प्लस ध्यान से देखो कौन रिलीज़ हो रहा है, OH माइनस रिलीज़ हो रहा है, प्लस OH माइनस रिलीज़ हुआ। तो इससे साबित क्या हो रहा है बच्चों? ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये वाटर का मॉलिक्यूल काम कर रहा है बच्चों एज अ एसिड। ये वाटर का मॉलिक्यूल एज अ एसिड काम कर रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल एज अ बेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है बच्चों कि यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स था, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह से, एक ही मॉलिक्यूल है पर वो एक एसिड की तरह एक बेस की तरह काम कर रहा है। यही शो करता है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे इसका स्टेट जो होता है वो एक्वास होता है, इसका स्टेट होता है वो एक्वास होता है, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है। अगर इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहा आपने तो आप लिखोगे K इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिखोगे OH माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन अ डिनोमिनेटर, H2O लिक्विड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, ओके। पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, मान लो कि मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया होता H2O का, उसका आयोनाइजेशन अगर देखते तो आप H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में ही देखते ना, ओके। तो ये आपको शो क्या करता है बच्चों? ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 दोनों थर्मोडायनामिकली इक्विवेलेंट है। तो आप अगर इसके बेस से लिखना चाहो तो आप लिख पाओगे K इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन अ डिनोमिनेटर में H2O लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन, ओके।
अब ये चीज़ क्लियर है बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करने वाले, तब जाके आपको जो मिलेगा ना, मतलब ये वाली चीज़ है वो लिक्विड में है तो इसे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा KW इज इक्वल टू H3O प्लस एंड OH माइनस, या फिर आप लिखोगे, इसे मैंने क्या किया बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कैलकुलेट किया डिनोमिनेटर का, या फिर आप इसे लिखोगे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यही होता है बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी जो होता है H2O के अंदर, उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जनरली होता है 1.0 10⁻⁻⁷ मोलर, इतना होता है। ओके एंड बच्चों जो OH माइनस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होता है, 1.0 10⁻⁷ मोलर होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना कॉन्सेंट्रेशन दोनों का होता है। अब मान लो आपने निकालना चाहा KW का वैल्यू, तो KW का वैल्यू कितना निकलेगा, H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे OH माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो H3O प्लस का वैल्यू है 1.0 10⁻⁷, 1.0 10⁻⁷, कुल मिला के कितना आया 1.0 10⁻14। ओके तो ये बना बच्चों हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये बना आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर इफ़ at given temperature concentration of OH minus is equal to concentration of H3O plus होता है, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ओके बट इफ बच्चों OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हुआ H3O प्लस से, H3O प्लस के सॉल्यूशन से ज़्यादा हुआ, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। ओके एंड इफ बच्चों H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ किससे, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है। ओके एंड ये टॉपिक क्या था, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एक का कॉन्सेंट्रेशन कम आ रहा है तो सॉल्यूशन लेस अल्कलाइन होगा, एंड अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप गौर करना, अगर आप ड्यूटेरियम ले लो इसकी जगह पे, तो सारा जो आयोनाइजेशन होता है ना वो ये वैल्यूज़ कम हो जाती है। ओके ये आप जेई के नीट के लेक्चर जब पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ पढ़ाई कराऊंगा मैं आपको। आई एम श्योर आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अच्छे से कॉपी में लिखो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द एनिमेशन टू। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I have two water molecules right over here, and typically the water molecules, as they interact with each other, they form these hydrogen bonds. That's due to the polarity of the water molecule. We've talked a lot about that. They slide past each other. These hydrogen bonds give them all of these neat properties of water. But chemistry is much messier than sometimes our diagrams or explanations show. There's all sorts of crazy interactions. All of these things are bumping into each other in all different ways. And not only are the molecules bumping in different ways, but at any given moment, the electrons are jumping around. And on average, they might spend more time around the oxygen, forming a partially negative charge at that end and then a partially positive charge near the hydrogens, because the hydrogens are having their electrons hogged away from them. In fact, this is what forms the hydrogen bonds. But there's always constantly change there because they're all just jumping around. It's all very probabilistic. And so you can imagine, under just the right conditions, one oxygen or one water molecule might just graze this water molecule in the right way that these electrons get close enough to nab this hydrogen. But it doesn't nab the entire hydrogen. It doesn't nab the nucleus and the electron. And a typical hydrogen atom, actually let me draw it. A typical hydrogen atom is just a proton in the nucleus. Actually, the most typical isotope of hydrogen has no neutron, so it's just a proton in the nucleus and an electron orbiting around it. So this right over here is positive. Actually, maybe I'll just draw it that way. You have a positive proton, and then you have a negative electron
you have a negative electron orbiting around it. Actually, it's more of a orbital, so it's really this electron is jumping all around it. But you can imagine these electrons in this covalent bond, these were already being hogged. These were already being hogged by this oxygen. In fact, that's what was forming this partial negative charge over here and a partial positive charge over here. So these would be attracted to this partial positive charge. Remember, there you have a partial negative charge over here. This is actually, it's forming the hydrogen bond. And actually could bond to the hydrogen proton, while both of these electrons, including one of these electrons that used to be part of this hydrogen, or you could consider used to be part of that hydrogen, are nabbed by this oxygen. And in this circumstance, and I'm not saying that this happens all the time, but under just the right conditions, this actually can happen. And what would result, what would result is this thing over here, instead of just being a neutral water molecule, would look like this. So you have your oxygen, you have not only your two hydrogens now, you now have a third hydrogen. So you have these two covalent bonds, this lone pair. And now this lone pair, which I have circled in blue, is now being shared with this hydrogen proton. This electron right over here of the hydrogen got nabbed by this oxygen. So now you formed another covalent bond. And now this character over here, he's lost the hydrogen proton, but he's kept all of the electrons. So this character over here is going to look like this. You're going to have your oxygen is still, and now it's going to only be bonded to one hydrogen, has these two original lone pairs, right over here, and then took both of the electrons from this covalent bond, and so it has another lone pair. So this molecule gained just a proton without getting any electrons. So if you do that, you're now going to have a net positive charge for this one over here, and this molecule over here, actually let me just write it. I want to write it a little bit neater. And this molecule over here, so we have this molecule plus this one. This one gained and this one lost a proton without any other changes, so it now has a negative charge. So just like that, you went from two neutral water molecules to two ions. And these ions, this one over here, the one on the left, the one that is now H3O, and it now has a positive charge. Actually, I put that O in a different color. H3O. It's a positive charge. This is called the hydronium ion. Hydronium. And this one over here, that is OH minus. So it's OH. Let me get the colors right. OH minus. This is called the hydroxide ion, or since it's negative, you could call it an anion. But I'll just write hydroxide. Hydroxide ion right over there. So you have this water, and it's just kind of automatically, under the right circumstances, this isn't happening a lot, but under the right circumstances, you could have one of the water molecules nabbing just the hydrogen proton from another water molecule, and that water molecule is going to keep both of the electrons, and then they ionize. They have autoionized. And this phenomenon, this is called the autoionization of water. Let me write that down. It's a nice big word. Autoionization of water. And I really want to make it clear what happens. This hydrogen over here that you can imagine at first was a proton and an electron. The typical isotope of hydrogen actually does not have a neutron. But then this electron got swiped. This electron was part of this bond, and it gets swiped away. And so all you're left is with this proton, and this proton goes to this other water molecule, giving that a positive charge. And so you might say, well, how frequently would I find hydronium ions in water? Well, the concentration, let me actually draw a little tub of water here. Let's say this is a liter of water. This is a liter of water. The concentration of hydronium in typical water, the concentration of H3O, in typical water, and you put brackets around something to denote concentration, is 1 × 10⁻⁷ molar. And molar, this just means moles per liter. This is the same thing as 1 × 10⁻⁷
moles per liter. And now you might be saying, well, what's a mole? Well, I encourage you to watch the video on what a mole is, but a mole is a quantity. It's like saying a dozen, but it's a much larger, a dozen is equal to 12 of something. Mole is roughly equal to, let me write it, a mole is approximately equal to 6.02 times 10 to the 23rd, 10 to the 23rd of something. And you're typically talking about molecules. A mole of a substance means approximately 6.022, it actually keeps going, times 10 to the 23rd molecules of that thing. So you might say, hey, 1 times 10 to the negative 7 times 6.02 times 10 to the 23rd, that would still get us, let's see, this, let me write it down. 1 times 10 to the negative 7 moles per liter times, I'll do it this way, times 6, I'll just go with 6 since we're going to go approximately. So approximately 6 times 10 to the 23rd, 6 times 23rd molecules per mole, well, these two would cancel out, and you would multiply these two numbers. You would get 6 times, let's see, 10 to the negative 7 times 10 to the 23rd. That's still going to be 10 to the 16th power molecules per liter. Molecules per liter. So your first reaction is, oh my God, I'm going to have 6 times, or roughly, I'll say roughly, approximately 6 times 10 to the 16th molecules of hydronium in this. That's a lot. We should see it all the time. But we have to remind ourselves there's just a lot of molecules of water in there as well. In fact, a liter of water is roughly, so 1 liter of H2O contains approximately 56 moles of H2O. So one way to think about it is I have one time, and if I'm thinking about a liter of water, I'll do it over here. I have 1 times 10 to the negative 7 moles of H3O for every 56 moles of H2O. So if you look at this ratio, then you start to appreciate the ratio of 1 times 10 to the negative 7 to 56. Let me do it down here. So this is the same thing as 1 times 10 to the negative 7 to 56 is the same thing as, let's just multiply both sides times 10 to the or the numerator and the denominator times 10 to the 7th. So if we do that, this is the same thing as the ratio of hydronium to regular water to H2O is going to be 1 to, see if I multiply 56 times 10 to the 7th, I'm going to have 5, let me get right in that same color. I'm going to have 5, 6, and then I'm going to throw 7 zeros at the end of it. Let me do that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the ratio of hydronium to regular H2O is 1 for every 560 million. So even though you might say, oh wow, look, we have a huge number of molecules of hydronium in this liter of water, for every one of them, you actually have roughly 560 million molecules of H2O. So that should give you an appreciation for the fact that this isn't that typical. In fact, you're going to see this much more often than you see this over here. In fact, if you wanted to make these arrows kind of show which direction the equilibrium sits in, it's actually much further to the left. So we could make this arrow much bigger, but it also gives you an appreciation for just how many molecules you have sitting in a liter of water.